इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the Ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी है। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में, एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण
उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों को कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. The new education policy encourages the multilingualistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की ये परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया, उनके मार्गदर्शन से इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ओहमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। Honorable members, I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the National Education Policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages. Considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages, including English, to implement the 3-language formula as prescribed in the new Education Policy 2020, and this was mentioned by the Education Ministry in response to an on-start question on 21st December 22. What measures has the Union Government taken to enhance the training of the teachers under the Nishta program? Honorable Minister. Chairman sir, education is in concurrent list, especially the school education. Primary responsibility is with respective state government, but in overarching mechanism, right, honorable member has rightly mentioned, in a post-corona, post-COVID process, Government of India has developed a digital module in the name of Nipur to capacitate or to upgrade the capacity of existing teachers. So NCRT and Ministry of Education is on this job. Diksha is a teaching learning digital module for the school education.
In that Diksha module, lot of new capacity building modules in many subjects are there. Any teacher of any state is free to avail that opportunity. I hope Honorable Member will advise his esteemed colleague in his respective state to guide and do some basic work without doing in the secondary work. Let them concentrate on the basic work of teaching learning methodology, because in his state, which is fortunately my own state, the dropout ratio is little bit alarming. For supplementary, Irana Kadadi. Honorable Member. धन्यवाद महोदय। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कर्नाटक में सीबीएसई विद्यालयों द्वारा कन्नड़ में शिक्षा देने हेतु क्या कार्य किया गया है और केंद्र सरकार के अधीन कितने विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में शिक्षा दी जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, मैं तो उसकी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की एकदम स्पेसिफिक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन मैंने पहला सप्लीमेंट्री में, कलिता जी की सप्लीमेंट्री में ये कहा कि आज सीबीएसई पहली बार भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की एक सर्कुलर दिया है, सब्जेक्ट टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि मैं एक्स भाषा में पढ़ना चाहता हूँ 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, उस सीबीएसई स्कूल में आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कन्नड़ भाषा में भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री वीरेंद्र प्रसाद बसे। Thank you very much, sir. I must compliment the government, Honorable Prime Minister, who recently said every state language of our country is a national language. I am equally very proud when Honorable Education Minister today informed the House in Pune, Maharashtra, one engineering college running through the Marathi language actually. It is a very proud moment for us. Recently, Honorable Prime Minister has announced in Assam there will be medical colleges and language of the medical college will be Assamese also. I want to know from the Honorable Minister, is any roadmap is planning by your ministry to follow up this decision? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तहत आती है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूँगा, पिछले 3 दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है चेयरमैन साहब, जो कहते हैं वो करते हैं, खुद वो प्रैक्टिस करते हैं। उसकी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, विशेष करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के द्वारा चलाने वाले भाषिणी टूल को यूज़ करते हुए, सर भाषिणी का अर्थ है कि हमारी जो ट्रांसलेशन की दुनिया है, आप अभी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, उसको हम इंटरप्रेटर के माध्यम से अभी उसको अपनी भाषा में सुनते हैं, लेकिन अभी और प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत की नौजवानों ने बना दिया है, IITs ने बना दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने उसको मदद किया है। भाषिणी टूल को यूज़ करते प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 दिनों में एक काशी तमिल संगमम में उन्होंने तमिल भाषाभाषी बच्चों को हिंदी में कहे, वो बच्चे पहला 5 मिनट को एकदम कुछ सेकंड्स के अंतराल में उसको उन्होंने तमिल में समझा। कल ऐसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत देश में विभिन्न बच्चों से बातचीत करते हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चेन्नई का गुवाहाटी IIT में बैठा था। प्रधानमंत्री जी के साथ भाषिणी टूल को यूज करते हुए उनसे संवाद हुई है। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अगर आसाम में कहा है कि मातृभाषा में, अहोमिया भाषा में भी मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी ये सरकार करके देगी। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 182, डॉक्टर सोनल मानसिंह। Thank you, sir. Question number 182. Honorable Minister. Sir, answer is laid on the table of the House. First supplementary, Dr. Sonal Mansingh.
steps have been initiated by the government to reduce the dropout rate of girl students, specifically in schools of rural India, and how effective have been those initiatives in achieving goals? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, ये ड्रॉप आउट के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछी है। सर, उसको मैं दो हिस्से में उसके उत्तर देना चाहूँगा। एक तो स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। विशेष करके स्कूल एजुकेशन जो मूलतः राज्य सरकारों के दायित्व में है, ये थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगह पे ड्रॉप आउट है। उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम, जो भारत सरकार की मेगा स्कीम है स्कूली एजुकेशन को मदद करने में, जिसमें लगभग हम 70,000 करोड़ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है विभिन्न राज्यों को। उसमें दो तीन इंटरवेंशन में कहना चाहूँगा। एक, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। स्कूल में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट एक चुनौती है, इसलिए सारे विषय को स्पेशल इंटरवेंशन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरी, सब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम भारत सरकार की चलती है, जहां बच्चियों के लिए विशेष स्कूल शिक्षा की दिया जाए। ये भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया की खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है पीएम पोषण चलाने के लिए। यह एक प्रमुख कारण है देश की ग्रामीण और गरीब इलाका में बच्चे स्कूल में आए। उसको आगे ले जाने के लिए ग्रामीण इलाका में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, इसकी भी एनविजन किया गया है। 14,500 स्कूल का भी देश में कम से कम सभी ब्लॉक में 1-2 स्कूल हो जाए, कम से कम एक स्कूल हो जाए, ये उसकी कल्पना है। मूल उद्देश्य है बच्चियों की ड्रॉप आउट रेशियो घटे। Second supplementary, Dr. Sonal Mansingh. Whether the dropout rate of country school and education is alarmingly high, if so, the steps that are being taken by government in view of the above suggestions, especially, sir, taking into account Beti Bachao, Beti Padhao, which has been going on for the past 10 years, and still if the dropout rate has not really come down as envisaged, what are the reasons and how do we address Honorable it? Minister. चेयरमैन सर, मैंने पहले सप्लीमेंट्री के अंदर इस सारे का विनम्रता से उत्तर देने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पहला क्वेश्चन में एक उत्तर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इन दिनों में पिछले 14-15 की तुलना में अगर आज हम 21-22 में उसकी कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, लगभग 25 से लेकर 50% की ग्रोथ, 80% तक एसटी वुमेन में 50-80% तक ग्रोथ हुई है। ये एक, लेकिन एंट्री होने के बाद उसको कंटिन्यू करके ड्रॉप आउट ना हो, ये एक चुनौती है। हम सभी को मिलकर इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड का जो स्कूल एजुकेशन में, ये महामारी के कारण ज़्यादा हो रहे हैं और कितना ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इसके कारण, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है आंखों के देख ये सामने रख के कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था मैकेनिज्म किया जाए जो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं रूरल एरिया में ये महामारी के चलते वो सब रोका जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर। कुल चुनौती वही है कि बच्चियों को हाथ पकड़ के स्कूल तक ले आना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने खुद एक कार्यक्रम लेते थे। गर्मियों के दिनों में वो खुद जाते थे, कोई एक ब्लॉक में बैठते थे 3 दिन और उसमें गांव-गांव घूमते थे। बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो उस इलाका में बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, उन घरों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री के नाते जाते थे, आज भी वो व्यवस्था वहाँ जारी है। जो गुजरात से सदस्य मित्र आते हैं उनकी सभी के अभ्यास से साला को निमंत्रण देने के लिए वो जाते थे, न्योता देने के लिए। समाज की सभी लोगों की दायित्व है बच्चियों को स्कूल तक ले आना, उनको हाथ पकड़ के एक 12वीं तक और हायर एजुकेशन तक ले जाना। बच्चियों की वैज्ञानिक प्रमाण होती है, जब बच्चों के लड़के और लड़की के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है, लड़कियां अनडाउटेडली अव्वल नंबर आते हैं, ये प्रमाणित हुआ है। लेकिन जो हमारे देश की सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है, उसमें समाज जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों की दायित्व है उसको आगे से नेतृत्व करना। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार। As per the union government and the national education policy, they wanted to promote all regional languages and particularly in primary education. As far as the Andhra Pradesh is concerned, the government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium in a primary education also, which is a mandatory. Due to the decision, dropouts are more in the state of Andhra Pradesh. Whether the union government has taken any steps to advise the state government to continue the regional language Telugu medium in the primary education. Honorable Minister. It's a very dynamic question and it's a good question also, it's a pertinent question. Government of India, as I said in my previous answers, Prime Minister is very clear on certain issue. All regional languages, all mother tongue oriented languages are national language. So there is no disparity. The child should read and write in the mother tongue. There is no second opinion. The language he is first time listening or uttering the word in the language, he should continue with that language for writing. There is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But according to my information, I had been to Andhra. I have seen a very unique model in Andhra. In the textbook of Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra textbook. A student through a smart device can read that in local Telugu language also. So education technologies are very dynamic, new things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother tongue. There is a consensus, there is no second opinion on that. Fifth supplementary, श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं और जो उसके कुरिकुलम है, उसके पाठ्यक्रम हैं, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि इस छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो एनसीईआरटी क्या उसमें एकरूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ एक छोटा सा मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इस एकरूपता के साथ एक बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा और झारखंड के बच्चे की शिक्षा या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है। Honorable Minister, it is more of a suggestion. मैं वही कहने वाला था इसे, लेकिन जो अभी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनी थी। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने अपना काम पूरा करके सिलेबस और टेक्स्ट बुक बनाने की काम शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी सारे राज्यों सरकारों के एनसीईआरटी को साथ लेते हुए नई सिलेबस और टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहा है। 1-2 साल लगेगा। ये सारे में जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है, यही सारा विषय अकोमोडेट किया जा रहा है और भी विषय को अकोमोडेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर।
माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, और हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also.
and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2020. Accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h, and now particularly if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is a, really it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Sir, Mr.
now Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Question number 184, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. Honorable Minister. सर स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है, मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं, और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है, और उनमें से महिलाओं में एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब, और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक, और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फलआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री Bhubaneswar Kalita, second supplementary. Thank you, sir. The new education policy encourages the
multilinguistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की यह परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया, उनके मार्गदर्शन से इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ओहमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। Honorable members, I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the national education policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages. Considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages, including English, to implement the 3-language formula as prescribed in the new Education Policy 2020, and this was mentioned by the Education Ministry in response to an on-start question on 21st December 22. What measures has the Union Government taken to enhance the training of the teachers under the Nishta program? Honorable Minister. Chairman sir, education is in concurrent list, especially the school education. Primary responsibility is with respective state government, but in overarching mechanism, right, honorable member has rightly mentioned, in a post-corona, post-COVID process, Government of India has developed a digital module in the name of Nipun to capacitate or to upgrade the capacity of existing teachers. So NCRT and Ministry of Education is on this job. Diksha is a teaching learning digital module for the school education. In that Diksha module, lot of new capacity building modules in many subjects are there. Any teacher of any state is free to avail that opportunity. I hope honorable member will advise his esteemed colleague in his respective state to guide and do some basic work without doing in the secondary work. Let them concentrate on the basic work of teaching learning methodology, because in his state
which is fortunately my own state, the dropout ratio is little bit alarming. For supplementary, Irana Kadadi. Honorable member. धन्यवाद महोदय। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कर्नाटक में सीबीएसई विद्यालयों द्वारा कन्नड़ में शिक्षा देने हेतु क्या कार्य किया गया है और केंद्र सरकार के अधीन कितने विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में शिक्षा दी जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, मैं तो उसकी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की एकदम स्पेसिफिक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन मैंने पहला सप्लीमेंट्री में, कलिता जी की सप्लीमेंट्री में ये कहा कि आज सीबीएसई पहली बार भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की एक सर्कुलर दिया है, सब्जेक्ट टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि मैं एक्स भाषा में पढ़ना चाहता हूँ 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, उस सीबीएसई स्कूल में आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कन्नड़ भाषा में भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you very much, sir. I must compliment the government, Honorable Prime Minister, who recently said every state language of our country is a national language. I am equally very proud when Honorable Education Minister today informed the House in Pune, Maharashtra, one engineering college running through the Marathi language actually. It is a very proud moment for us. Recently, Honorable Prime Minister has announced in Assam there will be medical colleges and language of the medical college will be Assamese also. I want to know from the Honorable Minister, is any roadmap is planning by your ministry to follow up this decision? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तहत आती है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूँगा, पिछले 3 दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है चेयरमैन साहब, जो कहते हैं वो करते हैं, खुद वो प्रैक्टिस करते हैं। उसकी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, विशेष करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के द्वारा चलाने वाले भाषिणी टूल को यूज़ करते हुए, सर भाषिणी का अर्थ है कि हमारी जो ट्रांसलेशन की दुनिया है, आप अभी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, उसको हम इंटरप्रेटर के माध्यम से अभी उसको अपनी भाषा में सुनते हैं, लेकिन अभी और प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत की नौजवानों ने बना दिया है, आईआईटीज़ ने बना दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने उसको मदद किया है। भाषिणी टूल को यूज़ करते प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 दिनों में एक काशी तमिल संगमम में उन्होंने तमिल भाषाभाषी बच्चों को हिंदी में कहे, वो बच्चे पहला 5 मिनट को एकदम कुछ सेकंड्स के अंतराल में उसको उन्होंने तमिल में समझा। कल ऐसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत देश में विभिन्न बच्चों से बातचीत करते हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चेन्नई का गुवाहाटी आईआईटी में बैठा था। प्रधानमंत्री जी के साथ भाषिणी टूल को यूज करते हुए उनसे संवाद हुई है। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अगर आसाम में कहा है कि मातृभाषा में, अहोमिया भाषा में भी मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी ये सरकार करके देगी। ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 182, डॉक्टर सोनल मानसिंह। Thank you, sir. Question number 182. Honorable Minister. Sir, answer is laid on the table of the House. First supplementary, Dr. Sonal Mansingh. What specific steps have been initiated by the government to reduce the dropout rate of girl students, specifically in schools of rural India, and how effective have been those initiatives in achieving goals? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, ये ड्रॉप आउट के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछी है। सर, उसको मैं 2 हिस्से में उसकी उत्तर
उत्तर देना चाहूँगा। एक तो स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। विशेष करके स्कूल एजुकेशन जो मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है, ये थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगह पे ड्रॉप आउट है। उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम, जो भारत सरकार की मेगा स्कीम है स्कूली एजुकेशन को मदद करने में, जिसमें लगभग हम 70,000 करोड़ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है विभिन्न राज्यों को। उसमें 2-3 इंटरवेंशन में कहना चाहूँगा। एक, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट एक चुनौती है, इसलिए सारे विषय को स्पेशल इंटरवेंशन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरी, सब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम भारत सरकार की चलती है, जहां बच्चियों के लिए विशेष स्कूल शिक्षा की दिया जाए, यह भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया की खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है पीएम पोषण चलाने के लिए। यह एक प्रमुख कारण है देश की ग्रामीण और गरीब इलाका में बच्चे स्कूल में आए। उसको आगे ले जाने के लिए ग्रामीण इलाका में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, इसकी भी एनविजन किया गया है। 14,500 स्कूल का भी देश में कम से कम सभी ब्लॉक में 1-2 स्कूल हो जाए, कम से कम 1 स्कूल हो जाए, ये उसकी कल्पना है। मूल उद्देश्य है बच्चियों की ड्रॉप आउट रेशियो घटे। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सोनल मानसिंह। Whether the dropout rate of country school and education is alarmingly high, if so, the steps that are being taken by government in view of the above suggestions, especially, sir, taking into account Beti Bachao, Beti Padhao, which has been going on for the past 10 years, and still if the dropout rate has not really come down as envisaged, what are the reasons and how do we address Honorable it? Minister. चेयरमैन सर, मैंने पहले सप्लीमेंट्री के अंदर इस सारे का विनम्रता से उत्तर देने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पहला क्वेश्चन में एक उत्तर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इन दिनों में पिछले 14-15 की तुलना में अगर आज हम 21-22 में उसकी कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, लगभग 25 से लेकर 50% की ग्रोथ, 80% तक एसटी वुमेन में 50-80% तक ग्रोथ हुई है। ये एक, लेकिन एंट्री होने के बाद उसको कंटिन्यू करके ड्रॉप आउट ना हो, ये एक चुनौती है। हम सभी को मिलकर इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड का जो स्कूल एजुकेशन में, ये महामारी के कारण ज़्यादा हो रहे हैं और कितना ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इसके कारण, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है आंखों के देख ये सामने रख के कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था मैकेनिज्म किया जाए जो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं रूरल एरिया में ये महामारी के चलते वो सब रोका जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर। कुल चुनौती वही है कि बच्चियों को हाथ पकड़ के स्कूल तक ले आना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने खुद एक कार्यक्रम लेते थे। गर्मियों के दिनों में वो खुद जाते थे, कोई एक ब्लॉक में बैठते थे 3 दिन, और उसमें गांव-गांव घूमते थे। बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो उस इलाका में बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, उन घरों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के नाते जाते थे। आज भी वो व्यवस्था वहाँ जारी है। जो गुजरात से सदस्य मित्र आते हैं, उनकी सभी के अभ्यास है साला को निमंत्रण देने के लिए वो जाते थे, न्योता देने के लिए।
समाज की सभी लोगों की दायित्व है बच्चियों को स्कूल तक ले आना, उनको हाथ पकड़ के एक 12वीं तक और हायर एजुकेशन तक ले जाना। बच्चियों की वैज्ञानिक प्रमाण होती है, जब बच्चों के लड़के और लड़की के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है, लड़कियां अनडाउटेडली अव्वल नंबर आते हैं, ये प्रमाणित हुआ है। लेकिन जो हमारे देश की सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है, उसमें समाज जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों की दायित्व है उसको आगे से नेतृत्व करना। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार। As per the union government and the national education policy, they wanted to promote all regional languages and particularly in primary education. As far as the Andhra Pradesh is concerned, the government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium in a primary education also, which is a mandatory. Due to the decision, dropouts are more in the state of Andhra Pradesh. Whether the union government has taken any steps to advise the state government to continue the regional language Telugu medium in the primary education. Honorable Minister. It's a very dynamic question and it's a good question also, it's a pertinent question. Government of India, as I said in my previous answers, Prime Minister is very clear on certain issue. All regional languages, all mother tongue oriented languages are national language. So there is no disparity. The child should read and write in the mother tongue. There is no second opinion. The language he is first time listening or uttering the word in the language, he should continue with that language for writing. There is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But according to my information, I had been to Andhra. I have seen a very unique model in Andhra. In the textbook of Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra textbook. A student through a smart device can read that in local Telugu language also. So education technologies are very dynamic, new things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother tongue. There is a consensus, there is no second opinion on that. Fifth supplementary, श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं और जो उसके कुरिकुलम है, उसके पाठ्यक्रम हैं, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि इस छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो एनसीईआरटी क्या उसमें एकरूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ एक छोटा सा मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इस एकरूपता के साथ एक बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा और झारखंड के बच्चे की शिक्षा या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है। Honorable Minister, it is more of a suggestion. मैं वही कहने वाला था इसे, लेकिन जो अभी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनी थी। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने अपना काम पूरा करके सिलेबस और टेक्स्ट बुक बनाने की काम शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी सारे राज्यों सरकारों के एनसीईआरटी को साथ लेते हुए नई सिलेबस और टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहा है। 1-2 साल लगेगा। ये सारे में जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है, यही सारा विषय अकोमोडेट किया जा रहा है और भी विषय को अकोमोडेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 183। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है
अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है, वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयर बैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियाँ गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims,
that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Shri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66... We take it now? Yes. Okay. So, honorable members, we will take items 1 to 10. Announcement first regarding bills. Honorable members, the Central Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023 as passed by the Lok Sabha were listed in today's revised list of business subject to receiving of Honorable President's recommendation under clauses 1 and 3 of Article 117, read with clause 1 of Article 274 of the Constitution for the consideration of the said bills by the House. Honorable members are informed that the Honorable President's recommendation has since been received. Papers to be laid on the table. Shri Muralidharan Phagan se Kulaste had taken leave. Is he here? As per the original business, it is Arjun Munda, but he has given a letter for it to be laid down by Bharti Praveen Pawar. Okay, so Dr. Bharti Pawar. Honorable Chairman, sir, on behalf of my senior colleague, Shri Arjun Mundaji, I rise to lay on the table of the House paper mention against his name at serial number 1 in today's revised list of business. Thank you. Item number 2, Shri Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Phagan Singh Kulaste, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 2 in today's revised list of business. साध्वी निरंजन ज्योति. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित
पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह। Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 3 of the revised list of business. श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 of the revised list of business for today, sir. Thank you. Shri V. Muralidharan, 7, sir. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Srimati Annapurna Devi, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 7 in today's revised list of business. Shri V. Muralidharan, sir, you are at 6 and 7 both. Sir, 6 has been laid by Rajiv Chandrasekhar. 7 I have laid already. Sir, help me get it in order. Dr. Subhash Sarkar, that is item 10 in my listing. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। Chairman sir, with your kind permission, I wish to lay papers on the table of the House mentioned at serial number 13 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. श्री अजय कुमार। सर, मैं आज की रिवाइज्ड कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Yes. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry, Shri Birendra Prasad Bashe. With your permission, I rise here today to submit the 324 report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry on promotion of electric vehicles in our country, which is listed against my name. Thank you, sir. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Dr. Ashok Vajpayee. Honorable Parliamentary Affairs Minister. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 42वें, 43वें, 44वें, 45वें और 46वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shri प्रकाश जावड़ेकर। G20 देशों के साथ भारत का जुड़ाव, इस संबंध में विभाग संबंधित विदेशी मामलों संबंधित स्थायी समिति ने 27वें प्रतिवेदन के प्रति हिंदी और इंग्लिश में पटल पर रखी। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Shri Vijay Pal Singh Tomar, Shri नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। अनुमति से मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति एक मूल्यांकन के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2023-24 के 52वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, Shri मिथिलेश कुमार। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने
यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन सभा पटल पर हिंदी तथा अंग्रेजी में रखता हूँ। धन्यवाद। Statements of the department related Parliamentary Standing Committee on मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर स्थानीय समिति के अंतिम की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। Reports of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Sri Narayan Koragappa. I rise to lay a copy each in Hindi and English versions of the 28th and 29th report of the Committee on Welfare of Other Backward Classes as listed against my name in today's list of business. Sri V. Muralidharan to lay papers on behalf of Sri Nityanand Rai. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Nityanand Rai, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Statements by Ministers Sadhvi Niranjan Jyoti. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। माननीय श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। Honorable Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 42nd report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demands for grants 23-24 pertaining to the Ministry of Textiles. Thank you. Now, motion for election to the Court of University of Delhi. Dr. Subhash Sarkar to move a motion for election of one member to the Court of University of Delhi. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I, on behalf of my senior colleague, Sri Dharmendra Pradhan ji, rise to move the motion for election of one member from amongst the members of the House to the Court of University of Delhi, mentioned against his name at serial number 22 in today's revised list of business. Dhanyawad. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move a motion for consideration of the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Central Goods and Services Act, Tax Act 2017 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Thank you. Would you like to speak, Honourable Minister? Yes, sir. With your permission, I just want to highlight what this amendment is all about. Sir, you are aware that the GST itself subsumed more than 17 taxes and 13 cesses of the states. Center and state, both of them got blended together into a single tax. Now, there are certain provisions and sections of the Act which give the power to levy the tax and also to review how these taxes are levied. In particular, Section 109 of the CGST provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. Now, the Appellate Tribunal, when being set up, will also look at the qualifications, appointments, and terms and conditions for service of the President, and also the judicial and technical members are specified in Section 110 of the Act. 109 gives you the power, 110 gives you the details of what the qualifications experience will have to be now. Under the GST law, sir, adjudicating orders are passed by the GST officers from the center and state depending on the jurisdiction allocated to each one of them. Now, appeals are made against these orders
which are passed by these adjudicating officers, and that appeal lies with the first appellate authority, who is an officer again within the tax administration and therefore of the respective center and the state. The second appeal against the orders of the first appellate authority under the center as well as under the state tax administration lies with the GST appellate tribunal, GST appellate tribunal. So this is the first forum at which the GST litigation process converges within the state, that is the appellate orders passed by the center and the state GST officers become a part of the same appellate forum, that is the GST appellate tribunal. Now, earlier in 2019, the GST 80 benches, appellate tribunal benches, were notified, but the same was challenged in the high courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition which was in the case of the Revenue Bar Association versus Union of India in the Honorable High Court of Madras, the High Court held as follows, and I quote, sir, the number of expert members, therefore, cannot exceed the number of judicial members on the bench, unquote. So, the Honorable High Court of Madras struck down Section 109 and Section 110 of the Central GST Act of 2017, by which we appointed the tribunal and by which the appointment, the qualification and the term, everything else was decided. Now that that got struck off, simultaneously the tribunal's reform of 2017 of 2020-21, which was brought in, also standardized the appointment, the terms, the qualification of all the tribunal benches, and the appointments which are being made to them have all now become standardized for all tribunals. That was happening parallelly. So, given all these developments, in the 47th meeting of GST Council, which was held in Chandigarh on 28 and 29 June, the GST Council discussed the changes that are to be brought in, and brought in such a way that the GST appellate tribunal in the GST law, which is there already in it, but it has to get constituted, we have to bring them in conformity with the judgment of the High Court, which was the Madras High Court. So, in the GST Council meeting, it was decided that we'll constitute it. So, the constitution also happened, constituting of these people, the tribunals were also happened, and then it was realized. I'll just tell you what was constituted also, sir. The report of the group of ministers which went into seeing all this was submitted to the council, and the council then took a call that we amend the 109 and 110 of these sections. Then the amendment of the Finance Act, through the Finance Act in 2023, the GST appellate tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are notified now. So the principal bench shall be located in Delhi and shall have a president, a judicial member, a technical member which is center, and a technical member which is state. The state benches shall also have two judicial members, a technical member of the center and a technical member of the state. All this was notified even by September 2023. Thereafter, sir, this is the immediate background of this amendment that we are placing before this Honorable House now. Thereafter, it was brought to the notice of the ministry by the Honorable Chief Justice of India in his administrative side through the registrar that the following aspect of the service and its terms are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. The Tribunal Reforms Act of 2021 brought a certain kind of rationalized approach to all the tribunals which exist in the country.
And therefore, in alignment with this, the Chief Justice wanted the CGST Act also to be in line with it, and therefore the tribunal also to be formed in the fashion. So the 2 points on which the Chief Justice came in to advise us, and the advice has been well taken, is that the maximum age limit for the post of the President and the members is 67 and 65 years in the CGST Act before 2 days, if the House approves, amendment. So the maximum age limit for the post of the President and members is 67 and 65 years in the currently prevailing CGST Act, whereas under the Tribunals Reform Act of 2021, it is 70 years and 67 years respectively. That is one point which was flagged by the Honorable Chief Justice of India. The second point that he pointed out, sir, is that the CGST did not have the provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the rules framed under the Tribunal Reforms Act. So if the Tribunal Reforms Act of 2021 had something and we didn't have it in the CGST, it wouldn't be right. So for appointing even advocates who with a standing of 10 years should also be brought in. So these are the two points which the Chief Justice of India have highlighted. We have now brought those as amendments to the current Act, and those are the amendments for which we are seeking the approval of the House. Thank you. Honorable Minister has spoken. Now the motion is moved. Now I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Mani Dr. Amar Patnaik ji. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, we support the amendment which has been brought in into the GST Act for exactly for the specific reasons that the Honorable Finance Minister has stated. That is number 2, to bring it in uniformity with the Tribunal Reforms Act 2021, and also to ensure that the number of cases that was going to the high courts because of the absence of this particular layer of adjudication would actually become operational, and therefore the number of cases would actually come down from the high courts and the Supreme Court, which already have a large number of cases. For the record, I think the Honorable Finance Minister has stated in several places that there are about 15,000 appeals which are pending at various levels before this particular amendment has been brought in, and this was 25% more than the last year. This is the latest figure which is available, around 15,000. Now, this particular amendment, when passed, would actually settle a number of these issues, and therefore it is very welcome. I compliment the government and the Finance Minister for it. Having said so, sir, there are two issues which I wanted to raise before the government by way of suggestion. Of course, one concern is that having this structure in place is one thing, but getting the vacancies filled up is another thing, and that is very important. In 2021, August 2021, the Honorable Supreme Court, the then Chief Justice, Justice Ramana, observed that there were 240 vacancies in these tribunals. And he expressed concern, and the advice to the government was to fill them up very quickly, because otherwise the entire process of the objective of forming these tribunals would not be achieved. Now, in 2022, to an unstarred question, number 1060, on 15/12/2022, the Minister of Law and Justice has given a position of vacancies in the tribunals. Now, unfortunately, Madam, these vacancies continue to be there at various levels. For example, in the Ministry of Corporate Affairs at the NCLT and the NCLAT level, the Ministry of Labour and Employment, in the Ministry of Finance at the DRT level. I don't want to get into each of the vacancies,
vacancies against each of these ministers. But these numbers, even after 1 year of the Honorable Supreme Court exercising, expressing concern, remains to be around 200 and 210. So I thought the next important thing that the government should be addressing is to fill up these vacancies by either revamping the existing machinery or process of selection of these members, judicial and technical members to these tribunals, or having a one-time measure to settle or to fill up these vacancies and then make the process roll on. Otherwise, the full benefit of this entire amendment would not be available to the people. The next point which I wanted to mention, sir, is the fact that the entire GST principle of one nation, one tax was brought in with the view to simplify the entire taxation law, have a common taxation law as far as indirect taxes are concerned in the country, and as Madam said, by subsuming a number of central and state taxes, that would improve the ease of doing business. This is one such step, and of course, many states have already, and in the GST Council, have taken the next step of having a one-time amnesty scheme also for settlement of GST dispute in the line with Sabka Vishwas scheme of 2019. But there is one more step which probably I thought I would suggest by way of suggestion to the Honorable Finance Minister, that is the authority of advance ruling under GST. Now, this particular architecture is welcome, but their entire view of looking at this thing is completely revenue-centric. Now, with the result that none budge from their position and there is no settlement. So, each of the states have done this advanced authority for advanced ruling. Is there a need for the government and the GST Council to consider for a central authority for AAR, which could address the issues relating to place of supply and resolve the conflicting views of state-level advanced authority for rulings? This is where I think a big bottleneck is there. Honorable Finance Minister may like to address this. The second one is the recourse to alternate dispute resolution mechanisms, sir. I think this is a very potent method, and since we have brought in the mediation bill also now, it should be taken advantage of to reduce the number of appeals that is happening on the GST front, because that would improve the ecosystem of business in the country. The mediation bill the effort in this direction actually should come through the GST authorities themselves, because leaving it to the private authorities, actually the revenue-centric approach always ensures that the dispute is never settled. If the government itself uses the mediation bills, mediation act that we passed recently, some of the cases which are very clear and where the dispute can be easily settled, and settles these cases, it would give a big impetus to the private parties also to use this forum to settle many of these disputes. So overall, sir, I think the process, the entire architecture, there is nothing to quarrel about that. It is a welcome step. But we have to fill up these vacancies, and number two, probably look at other avenues of settlement of disputes, including alternate dispute redressal mechanisms. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विस्तार से इस बिल के प्रावधानों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट आर बीइंग अलाइंड विद द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 to initiate the administrative process for operationalization of GST appellate tribunals at the earliest. Actually, the age has been increased. It is allowed from 67 to 70 for President of the Appellate Tribunal, and for the members from 65 to 67 years. And it has been aligned with the Tribunal Reforms Act 2021. सत्य महोदय, जब हम जीएसटी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस बिल की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, तो हम आज के दिन श्री अरुण जेटली का स्मरण अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और श्री अरुण जेटली जी, जिनके बारे में कहते हैं द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, अगर पूरे देश के सभी राज्यों और सभी राजनीतिक दलों में
उन्होंने सहमति पैदा नहीं की होती तो इस देश के अंदर जीएसटी लागू करना असंभव कार्य था। और आज हम जब 7.5 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं सीपीएम की सरकार, कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी, अलग अलग दलों की सरकारें, अलग अलग राज्यों के अंदर टैक्स रेट्स, अलग अलग राज्यों में वैट की प्रक्रिया इतनी अलग थी और उन सभी राज्यों को उन सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट करके और वन नेशन वन टैक्स ये इम्प्लीमेंट करना साधारण काम नहीं था। मैं तो इस राज्यों की वित्त समिति का और चेयरमैन रहा और मैं जीएसटी और वैट से लगभग 20 साल से जुड़ा रहा हूँ। मैं कितना कठिन काम है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं सभापति महोदय, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने हित। पंजाब और हरियाणा में परचेज टैक्स, उनको दे वर अर्निंग मोर देन 5,000 crore as a purchase tax from procurement. Maharashtra was earning more than 5,000 crore from octroi. बिहार जो है वो इंट्री टैक्स से पैसा अर्जित कर रहा था और कोई राज्य इन टैक्सेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं श्री अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके बारे में एक शब्द में द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, और उन्होंने सभी पार्टियों के लोगों को एक साथ बैठाकर और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करवाया। और मैं सभी दलों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, प्रणब मुखर्जी नहीं कर पाए, वो काम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखला दिया। तो इसलिए सभापति महोदय, दूसरी एक बड़ी बात है, जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री अभी निर्मला जी हैं, वो उसकी चेयरमैन हैं। पिछले 7.5 साल में एक निर्णय छोड़कर एक भी निर्णय वोटिंग से नहीं हुआ। बाहर जाकर कुछ भी लोग बयान देते हों, विरोध करते हों, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। ये भी कोई साधारण काम नहीं है। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने देखा इनको कि अरुण जेटली के बाद हम लोग को डर लगता था कि जीएसटी काउंसिल कैसे चलेगी, क्या अरुण जेटली जिस तरह से चला पाते थे कोई दूसरा चला पाएगा। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके पेशेंस की दाद है। भले ही सदन में कई बार हमको लगता है कि इम्पेशेंट हो जाती है, बट आई हैव सीन निर्मला जी sitting for hours and hours and listening to the suggestions and arguments given by the different political parties or different finance ministers. तो इससे सभापति महोदय, ये एक ऐसी बॉडी है जो देश के सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, सभी व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, घंटों चर्चा होती है और अंत में बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है। एक निर्णय केवल वोटिंग से हुआ था, वो भी सीपीएम के केरल के वित्त मंत्री थे थॉमस आइजैक, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर, जबकि सारा सदन एकमत था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो वोटिंग कराऊंगा, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर। उस एक मुद्दे को छोड़ दें तो आज तक किसी भी मुद्दे पर कभी भी वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मुझे तो लगता है कि कुछ दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की बॉडी बनाई जाने की आवश्यकता है, खास करके मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कि बैठ कर निर्णय क्यों नहीं हो सकता है। क्यों अलग अलग राज्यों में टैक्स की रेट्स अलग होगी, प्रक्रिया अलग होगी, क्यों नहीं पूरे देश में वन टैक्स वन रेट हो सकता है। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बाकी कई विभागों में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। सभापति महोदय, इस जीएसटी की एक बड़ी खासियत ये रही कि सब कुछ ऑनलाइन है, यानी आप अमेरिका में भी बैठकर
टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं तो लंबे समय तक बिहार का वित्त मंत्री रहा 2005 से, और मैंने वैट के समय में देखा कि लोगों को बैंक जाना पड़ता था चालान पास कराने के लिए और ट्रेजरी में जाकर पैसा जमा करते थे। रिटर्न फाइल करना कितना कठिन काम होता था। आज सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, जो टैक्स जमा करना वो ऑनलाइन, रिफंड ऑनलाइन। आपको कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देखा नहीं कि ऑफिस कहाँ पर है, और लोगों ने देखा भी था एक समय के अंदर। और ये जीएसटी नेटवर्क, ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। करोड़ों करोड़ ट्रांजैक्शंस को किस तरह से और कंपाइल करता है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, ये जीएसटी का नेटवर्क जो है, ये भी भारत सरकार के प्रयास से और आज चल रहा है। सती महोदय, वो दिन भी आपको याद होगा, हर राज्य में चेक पोस्ट होता था। अगर तमिलनाडु से कोई गुड्स लेकर चला और अगर बिहार तक आना है तो उसको एक आधे दर्जन राज्यों में चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता था, अपने गुड्स की जांच करानी पड़ती थी। सारे बैरियर्स ख़त्म, सारे चेक पोस्ट ख़त्म, लॉजिस्टिक कितना आसान हो गया, और इसके कारण कितने पेट्रोल की बचत हुई, कितने डीजल की बचत हुई, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और पूरे देश के अंदर जो टैक्स रेट तमिलनाडु में वही बिहार के अंदर, और जो पांडिचेरी में है वही टैक्स रेट जो है मिजोरम के अंदर है। तो इसलिए वन टैक्स वन रेट। और सौती महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता इसको गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहते कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अगर गब्बर सिंह टैक्स है तो घोषणा करें कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई, जो बननी नहीं है, तो हम जीएसटी को ख़त्म कर देंगे। है ही मत तो घोषणा करें। लेकिन आए दिन में देखता हूँ कि वो कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है किसी कांग्रेस शासित राज्य की हिम्मत कि जीएसटी में काउंसिल के निर्णयों को अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंट न करें। मुझे याद है कि एक साल पहले ये कुछ चीज़ों पर टैक्स रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, फूड ग्रेन आइटम्स और बाकी पर। कितना विरोध हुआ, लेकिन क्यों कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको लागू किया? अगर वो टैक्स रेट गलत था तो आप लागू नहीं करते। और सबसे पहले केरल की सरकार ने लागू किया, जो बाहर में इतने बयानबाजी कर रहे थे। तो इसलिए सती महोदय, बाहर जो बयान दें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन सदन के भीतर जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है उसको सभी राज्य जो है और यथावत लागू करने का काम करते हैं। और सभापति महोदय इतना ही नहीं, तो इसके अंदर 1,67,000 करोड़ का नवंबर महीने में और टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है 1,67,000 करोड़। और जिन लोगों को लगता था कि जीएसटी आएगा तो टैक्स कर संग्रह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो रिकॉर्ड 1,67,000 करोड़ से ज़्यादा का संग्रह हुआ है। और 1,60,000 करोड़ की जो लिमिट है कि का जो उसको तो इस साल एक साल में कई बार जो है इन लोगों ने पार करने का काम किया है। और सती महोदय, अब देश के जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी जीएसटी को स्वीकार कर लिया है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जब जीएसटी लागू हुआ उस समय 64 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे। मीन्स एट दैट टाइम ओनली 64 lakh businessmen were paying GST. Only 64 lakh were registered under GST. और आज उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1,38 lakh. तो 64 lakh से it has been increased to 1,38 lakh. लगभग संख्या उनकी दुगने से ज़्यादा हो गई। और इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया। जो इंस्पेक्टर राज
शब्द चला करता था वो इंस्पेक्टर आज समाप्त हो गया। सौती महोदय, इस अवसर पर मैं निर्मला जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक बड़ी चुनौती है फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम्स की, और ये मैं जब इंग्लैंड गया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी इस अध्ययन करने के लिए, तो उन देशों में भी देखा कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी। और आज जीएसटी की सबसे बड़ी अगर कोई एक चुनौती है तो ये फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जीएसटी में जो इवेज़न है, टैक्स का जो इवेज़न हो रहा है इस फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम के कारण, 1920 में द इवेज़न वाज 40,000 करोड़, which increased to 49,383 crore in 2021. Again, it increased to 73,000 crore in 21-22, और 22-23 में इंक्रीज टू 1,31,000 करोड़। और अभी तो 23-24 का भी तो नवंबर महीना, दिसंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का आंकड़ा है कि टैक्स इवेजन विच हैज़ बीन डिटेक्टेड 1,51,000 करोड़। और अगर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 अगर ये 4.5 साल का आंकड़ा ले तो 4,46,000 का टैक्स इवेजन डिटेक्ट हुआ है, और करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इवेजन था वो रिकवर हुआ है, और करीब 1400 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये मैं जानता हूँ कि जीएसटी काउंसिल के सभी राज्य के लोग लगे हैं कि ये जो टैक्स इवेजन हो रहा है, और इसको रोकने के लिए किसी इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम ऑनलाइन जो सिस्टम है वही रेड फ्लैग दिखा देता है, वही बता देता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा इस्तेमाल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कहीं इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। तो निर्मला जी के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। इस फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर दोज टैक्स पेयर्स who intend to buy and sell only within a state, जो इंटर स्टेट बिजनेस नहीं करते हैं, अपने ही राज्य में माल की खरीद करते और बिक्री करते हैं, उनके लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन और रिटर्न का प्रोसेस जो है इसके बारे में और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बिकॉज सच टैक्स पेयर्स डू नॉट पोज द रिस्क ऑफ पासिंग इंटर स्टेट क्रेडिट which can be buried deep through a network of shell companies. दूसरी बात ये कि जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम करने वाले जो लोग हैं, मैं उसके बारे में भी सुझाव देना चाहूँगा। However, fraudulent credit claims are causing concerns not only to government but also to genuine taxpayers whose credit claims are denied because they have accrued from fraudulent sources and the taxpayer is unaware about this. इसको डील करने के लिए रॉबस्ट सिस्टम ऑफ रिस्क प्रोफाइल्स में भी सेटअप टू forewarn likely suspects and subjecting to such persons to comprehensive and physical scrutiny before granting them registration. और मेरा सुझाव होगा कि इस तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो क्रेडिट हैं उनका क्वेंटम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इतना ही वो केवल क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो ठीक व्यवहार करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके क्लेम को और बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशोल्ड है, आई डोंट रिमेंबर मैडम व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड एज ऑन टुडे, बट आई थिंक इट इज़ 40 लाख इज़ द थ्रेशोल्ड. So if it is threshold 40 lakh, it was decided about 7.5 years back. So GST Council could think of increasing the
threshold, raising the threshold from 40 lakh to 60 lakh. And I still remember when Arun Jaitley was there and we were discussing about the threshold, because earlier it was 20 lakh. So there was suggestion also 60 lakh, 2 minutes or. But ultimately it was decided for 40 lakh. तो मुझे लगता है कि अगर 60 लाख थ्रेशोल्ड का अगर निर्णय लिया जाता है तो हजारों की संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाएंगे और आपको जीएसटी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अंतिम मेरा सुझाव है वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, क्योंकि हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड 71 सो कॉज नोटिसेस involving GST to the tune of 1,12,000 crore have been issued to online gaming companies during financial 22-23 और 23-24। इस संबंध में मैं मैडम इतना ही कहना चाहूँगा, to avoid a situation like the online gaming issue where huge demands have been created for the entire GST period and bunched in just few months, कुछ ही महीनों में आपने नोटिस देकर पूरे पीरियड का 1,12,000 करोड़ की नोटिस दे दिया। There should be ample clarification to trade and the tax administration on other major contentious issues like virtual digital assets and services relating to the digital economy। तो इन 2-3 सुझावों के साथ और अंत में मैं यही कहूँगा, सरस्वती महोदय, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो लोगों ने कहा कि दुनिया की जिस देश में जीएसटी लागू हुआ वहाँ सरकार चली गई और देश के अंदर दुनिया में सैकड़ों सरकारें थी जो जीएसटी लागू होने के कारण चुनाव हार गई और यही लोग कह रहे थे भारत के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने जीएसटी लागू किया और चुनाव हारने के बजाय प्रचंड बहुमत से और हम दोबारा लौट कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। ऑनरेबल श्री विडा मस्तान राव यादव। Thank you, Chairman, sir. 5 minutes. Thank you. Oh, Honorable Chairman, sir, fellow members of the House, as we stand here today, we mark a crucial milestone in the journey of Goods and Service Tax Act, the proposed establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal. This long-awaited body promises a dedicated platform for the taxpayers to seek clarity and addressal on their GST concerns, alleviating the burden of navigating the existing legal system. I would like to begin with some commendable aspects of the bill. Positive, sir. As mentioned above, the Goods and Service Tax Appellate Tribunal represents a dedicated platform to seek clarity on tax positions and resolve outstanding appeals against first appellate orders. The GSTAT will provide taxpayers with a faster and more convenient way to seek redressal for tax concerns. This could potentially reduce legal costs and delays associated with navigating the High Court system. Sir, our concerns and suggestions, sir, higher number of GST slabs. Current system. Regular taxpayers face 5 primary slabs, that is 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and additional rates like 3% and 0.24% plus a varied cess. Complexity and confusion. India's high number of GST slabs, 5 primary and 2 additional and plus cess, creates confusion for taxpayers, increasing administrative burden and potential errors. So, multiplicity of rates hinders tax administration, requiring extensive resources for managing different rates and preventing leakages. Our suggestions are gradual reduction. Implement a phased approach to reduce the number of slabs, potentially merging adjacent rates or creating broader categories, that is 3 to 4 times over time. Rationalized cess system.
review and streamline the cess structure, potentially merging or eliminating certain categories or simplifying calculation methods, sir. Strengthening IT infrastructure. The goods and service tax network has been plagued by repeated technical glitches, disrupting smooth return filing for businesses. These malfunctions are not isolated incidents. In 2019, a system crash triggered by a surge in filings caused widespread inconvenience and hindered compliance efforts for thousands of taxpayers. Our suggestions are scalable infrastructure. Upgrading the GSTN infrastructure to handle spikes in user activity and increased data volume can prevent crashes and ensure system stability during the peak periods. Data reconciliation mechanism. Implementing the automated data reconciliation system can identify and rectify discrepancies between taxpayer data and government records, streamlining return processing and minimizing errors. User-friendly interface redesign. Simplifying the GSTN portal interface with clear navigation and plain language can enhance user experience and improve accessibility for taxpayers with varying technical proficiency. By addressing these challenges and implementing the proposed solution, the GSTN can become a more reliable and user-friendly platform, facilitating smooth return filing and enhancing compliance for businesses across India. Sir, our concerns of anti-profiting matters. The effectiveness and fairness of the Competition Commission of India in fulfilling its intended role of preventing profiting after GST rate reductions is under question. Several factors contribute to this concern, sir. Case backlog. With nearly 130 cases pending as of October 2023, the CCI faces a significant backlog, causing delays and potentially deterring businesses from passing on rate reduction due to the fear of lengthy investigations and penalties. Streamline case processing, sir. Implement measures to expedite case resolution, such as prioritizing urgent cases, setting clear timelines for investigations, and utilizing technology to automate processes. This will reduce the backlog and encourage businesses to comply with the CCI's mandate. Minimize compliance burdens. Consider simplifying procedures and audits for small and medium enterprises, potentially through self-assessment mechanisms or tied compliance requirements based on the business size. This is our conclusion, sir. The establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal, represent a significant step forward in the evolution of the GST system. This specialized forum for taxpayers holds the potential to streamline dispute resolution and alleviate burdens on the judicial system and foster greater confidence in the overall tax administrative framework. So, however, to truly unlock the full potential of the GST system, we must acknowledge the need for further systematic improvements. The issues surrounding the complexity of the slab structure, the challenges associated with the goods and service tax network infrastructure, and the concerns regarding anti-profiteering measures cannot be overlooked. With this concern and session, we, on behalf of the YSRCP party, support this bill. Thank you, sir. Thank you. Manya Vidamastan Rao ji. All members, you are supposed to speak, not to read your speeches. Yes, thank you. Manya Dr. M. Thambi Durai ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to participate in the discussion on the Central Goods and Services Amendment, Second Amendment Bill brought by Honorable Finance Minister to amend the Central GST Act 2017, sir. Honorable Member, former Finance Minister of Bihar, your state, he raised many issues regarding the state, how the certain states are like Kerala, Tamil Nadu, how they are raising that certain problems. I want to bring to the kind notice to the through you to Honorable Finance Minister and the government also, sir. Even though it's putting a single tax, the tax revenues are coming and sharing, both the states are sharing. In Tamil Nadu, for example, say
the inspection Raj, our Modi said, former finance, but there is no inspection Raj. But in Tamil Nadu, if you take, lot of inspection Raj is going on, harassing the people. For example, if a secretarial department is also is there, they are coming, instead of GST people are not coming, GST people. These sales tax people are harassing everywhere, going and collecting, torturing, putting fines and everything, they are creating. Because, and I'm, sir, regarding that, because why we are collecting the tax and everything to help the people. Now, present important situation of Tamil Nadu, what we are facing that I want to highlight, because Finance Minister is here, sir. On 18th December, historic rains and subsequent flood paralyzed life in the southern states of Tamil Nadu, namely Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi and Kanyakumari. Unprecedented heavy rain in these 4 districts caused severe damage to crops, for properties, infrastructure facilities. This Maroon district had cut off from the rest of Tamil Nadu, extreme damage, but the present government, what Tamil Nadu government says, due to meteorology, they are not given properly forecasted that. Therefore, even Chief Secretary level, they are telling this kind, accusing the central government as well as the meteorology department. It's a wrong thing, sir, because the state government failed to solve all this, knowing that how to handle them, how to help them, sir. In that respect, for example, infrastructure, roads like canals, tanks, all have been affected in southern district. My leader, Adapadi Palaniswamy, former Chief Minister of Tamil Nadu, and ADMK party leader, visited the affected people in those districts and consoled them. He asked the government to provide them food, Tamil Nadu government to provide them food, water and milk immediately, which their people are not getting. Had the administration taken sufficient precaution measures, Tamil Nadu government had taken the administration, taken sufficient precaution measures, people would not have suffered so badly, sir. The government should immediately undertake rescue and relief of operations. Our leader and former Chief Minister, Tamil Nadu Chief Minister, former Chief Minister, Sri Adapadi Palaniswamy, demanded that a sum of rupees 25,000 crores has to be given each of the affected farmers, and an amount of 10 lakhs should be given to the kin of the 8 persons who died in Tirunelveli. Sir, and also I request, sir, especially the state government, what they are doing, putting always, they are collecting the money from central government. We don't know how they are spending, what they told me, could not understand. But always putting the blame on some other side, failing their maladministration. GST. No, subject means, sir, because it's a GST, because our former finance, your finance minister details said about the subject, what subject, in the correlation. I am also speaking that, sir. You have to allow me, because serious matter. If you take Tamil Nadu tax system, if you take what they are doing, in Tamil Nadu government, they are increased, they are blaming central government not getting the fund. But they are raising fund as they like, affecting the Tamil Nadu people. They are putting taxes, increased property tax heavily. And also proper registration tax also increased there, or property registration also increased. Electricity rates also increased. Milk price also increased. And also, sir, you know very well, most of the governments which are ruled by some other, I don't want to mention the governments, most of the governments, they are blaming the central not to get the money. They are doing the most of the taxes, collecting that is especially liquor is going on. Wherever you see, sir, I am coming to the point, because of most of the things, the government, excise department, through the excise department, especially, their rates are increasing more and more in collecting money. Because common men are affected. They cannot blame the central government. But what they are doing about the Tamil Nadu government, if you take, they are outright said, what are these kind of property tax increasing, property registration tax increase, electricity increased, and also, coming to the petrol chest. Petrol chest is a central government is requesting government to reduce it. But Tamil Nadu government in the election manifesto, the DMK government, they are going to reduce it.
Please speak But they on have the not subject. reduced. These are tax systems, I am telling Right you. now, They have not reduced the it's on tax. GST. But at the same time, GST also, they are getting a lot of money from Tamil Nadu central government. But they are not properly utilizing. They are not in prepared action. That is why the most of Tamil Nadu people suffered now. The Chennai also, what happened, we know. 4,000 crores we had, we don't know. But they demanded 5,000 from central government. Now, last time, yesterday also, our Chief Minister, Tamil Nadu Chief, came and met Honorable Prime Minister seeking the help. But central government, even whether they are using properly that money, that is what I am raising here. That is, I am more concerned that our people must who affected these areas, especially I told you, regarding the districts in Tamil Nadu, Yes, speak on the subject now. Tirunelveli, Tenkasi. Yes, you have already spoken on this. I finish. Speak on the subject. Therefore, our former Chief Minister, Edappadi Palaniswamy, requested the Union Government and Prime Minister should consider people's sufferings and provide sufficient relief funds because we are not having any faith on the state government. They are not properly utilizing, only putting blames. I request the central government come forward to help rescue our Tamil Nadu people, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable Dr. K. Lakshmanji. Thank you, Deputy Chairman, sir. At the outset, I would like to support the bill introduced by Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharamanji. It not only extends the upper age limit of GST Appellate Tribunal Chairman to 67 years, but also allows the advocates with 10 years of experience to be eligible to become members. Sir, the bill introduced by Modi ji's government is not only a reform, it will not only increase the overall efficacy of the functioning of tax tribunal, but will promote the ease of doing business. Due to inability of the earlier Congress government to introduce such reforms for the last 70 years in their rule, more than 80,000 cases are still pending before the indirect tax tribunals of the country. The introduction of the bill not only helped drastically, but reduce the pendency of cases. हमारे नेता सुशील जी ने विस्तार रूप से जीएसटी के बारे में वो जिक्र किया और मैं ज़्यादा राजनीति न करते हुए इतना ही बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी हमारे गैर भाजपा शासित राज्य बार बार हमारे पेट्रोल और डीजल के महंगाई के बारे में वो जिक्र करते हैं, मगर जब बात आती है तब वैट 1 रुपये भी उसमें कटौती नहीं करते हुए किस तरह उंगली हमारे सरकार के ऊपर बताने के लिए वो प्रयास करते रहते. But when it comes to the discussion on the inclusion of this petroleum products and taxes into the purview of GST, कोई भी हमारा विपक्ष के राज्यों में सहमत नहीं देते. बाहर तो बताते कि महंगाने के बारे में, मगर जब जीएसटी की परव्यू की बात आती है तो कभी उसका समर्थन नहीं की. ये तो सभी लोगों को जानकारी है. बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ बिल, सर, it is natural that litigations and taxes go together. It is an unending fight between a taxpayer and a tax collector. Provision of dispute resolution mechanism in the statute is the cue to such disputes. Tribunal is the second tier in the GST appeal mechanism. Due to litigation, the GST tribunals could not be so far constituted. Tribunal being the highest fact-finding authority must be the place where the disputes must end. The proposed amendment shows the government's commitment to ensure speedy justice to the taxpayers. इसके पहले जैसे बताया सुशील जी ने वन नेशन वन टैक्स के बारे में, आज not only it has helped the ease of doing business for the business people and record collection of 1,67,000 crores. Hats off to our Honorable Finance Minister and Modi ji's government, which is also a transparent and accountability. And have been seen from the government side, Madam Nirmala ji, the share of the states are being contributed on time without any delay. Isliye, I once again thank the government for giving an opportunity to good number of advocates to be part of this
statutory authority. Madam, my suggestion from my side that chartered accountants with the same qualifications as that of advocates may also be considered for appointment as members of GST tribunals. As many CAs have been successfully functioning as members of the income tax appellate tribunals, experience and expertise of CAs in accounting procedures would be an added advantage on the benches of tribunal. So while congratulating the government for successfully implementing the GST law in our federal setup, I fully support this bill and I stand here to support this bill. Thank you, sir. Thank you, Dr. K. Lakshmanji. Mani Shri Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, this bill intends to align certain provisions of the Central Goods and Services Taxes Act 2017 with the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, I rise to speak in the favor of this bill. So the bill is also a testimony of the resolve of Honorable Prime Minister towards streamlining of rules. More than 1,500 redundant and obsolete laws have already been done away with. And with such measures, measures are in addition to the process of enhancing administrative efficiencies in reducing the workload and the caseload. Sir, the GST has ushered in a new era of financial governance leading to enhanced financial administration. GST has not only widened the tax collection, but has also led to formalization of the Indian economy. From fragile 5 to top 5, the Indian economy has traveled a long distance in the last 9 years under this government. In 2013-14, our per capita income was 68,000, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores, and the Union government under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. Between 2004 and 14, tax collection was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. The GST collection has reached 1.87 lakh crores in April 23, and the monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were at 309 billion. They stand today at 593 billion. Today, the Indian stack enabling Digital India is a focal point of global discussion. In financial year 23, over 103 billion digital transactions worth over 166 trillion Indian rupees of transactions across India. The number of transactions was estimated to rise up to over 411 billion by 2027 in the country, sir. These numbers are just mind-boggling. The world is flabbergasted at our success in the digital payment ecosystem. The robust new companies registration depicts strong growth intentions. Around 93,000 companies were registered in the first half of 23-24 as compared to the 59,000 5 years back. The average daily registration of new companies increased to 622 in 23-24, an increase of almost 58% from 395 in 18-19. All scheduled commercial banks' credit growth year on year has been accelerated since early 2022. Aggregate deposits grew by 13.2% and credit by 20% till September. In the coming months, we expect the credit demand to increase even further. Exceeding all expectations and predictions, India's gross domestic product has demonstrated a remarkable annual growth of 7.6% in the second quarter of financial year 24, building on a strong first quarter growth of 7.8%. The second quarter has outperformed the projections with a growth of 7.6%. The IMF in its recent report, very recently, sir, has applauded India's economic performance and has termed it as a star performer, contributing it to 16% of the global economic growth. It has lauded the country's digital public infrastructure and strong government infrastructure push for the sustained growth, and has projected India's economy to grow at 6.3% in the current fiscal year. India has emerged as an outstanding performer among major economies, showcasing resilience in the face of global uncertain environment characterized by risks related to geopolitical conflicts, fluctuating energy prices, and concerns about a potential recession. This impressive milestone further substantiates the country's unique development paradigm, a paradigm that has been a hallmark of the Prime Minister Narendra Modi's government in the last 9 years,
set to leave an inspiring trail for other developing nations to follow. So, the Honorable Prime Minister Modi is focused on building fundamental public infrastructure first, empowering individuals to act as agents of change. We have seen the approach in the government schemes like Saubhagya, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Ayushman Bharat, among others. Today, we have achieved 100% electrification of villages, while over 13.7 crore tap water connections make water available to 70% of our families from only 17% about a decade ago. So India is following a 4D model of development, demography, democracy and diversity. And the period till 2047 is one of the huge opportunities that Indians who are living in this era have a great chance to lay a foundation for the growth that will be remembered for times to come. For a long time, India was perceived as a nation of 1 billion hungry stomachs. But now India has been seen as a nation of over 1 billion aspirational minds, more than 2 billion skilled hands, and hundreds of millions of young people. So who are the beneficiaries of this rapid economic progress? I ask myself when I see around, it is the maids who come to our houses to assist us in our daily chores. Yes, they are the beneficiaries. Is it the gardeners? Is it the milkman and the vegetable vendors? Yes, definitely. Is it the drivers or the safai karamcharis? A big yes. Is it the watchmen in our offices? It is the employees in my firm which I can personally vouch for. It is the ST, SC, women and the weaker sections of the rural India which I travel to almost every other day. Sir, the economic progress has actually percolated down to the last person in the queue. And Antyodaya ka uday hua hai. Sir, I would like to thank the Honorable Finance Minister for addressing the concerns of the Honorable Supreme Court and being able to bring this bill to its culmination point. It is for the leadership and the vision of the Honorable Prime Minister that young Indians are thinking of coming back to India and not leaving India. The reverse brain drain, which is unheard, has begun. Modi is definitely a short form for man on development of India. Thank you, sir. Thank you, Kartikeya ji. माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी. माननीय श्री अजय प्रताप सिंह, 4 मिनट. धन्यवाद उपसभापति महोदय. आज ये जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं. उपसभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस बिल पर बोलने का तय किया है. इसके पीछे की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस बिल को इतना भयावह बताते हैं कि उन्होंने इसका नामकरण गब्बर सिंह टैक्स रखा है. मेरी समझ के अनुसार वो इस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि शोले पिक्चर में गब्बर सिंह नामक एक डाकू था जो लोगों को लूटता था, शोषण करता था. तो उनका आशय यही था कि ये टैक्स भी लोगों को लूटता है. इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इस टैक्स को जानूं, समझूं, आखिर जीएसटी है क्या. और इसीलिए मैंने इस बिल पर बोलने का निश्चय किया. और इस निश्चय के साथ जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसका अध्ययन किया और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो हमारे विपक्षी साथियों ने चाहे जो समझकर इसका नाम गब्बर सिंह रखा हो, लेकिन मेरी समझ के अनुसार गब्बर शब्द की उत्पत्ति गबरू से हुई है. गबरू को ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं जो हष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, ताकतवर हो. तो ये टैक्स वास्तव में गबरू टैक्स है. गबरू टैक्स इस मायने में है कि हमारी इकोनॉमी को ताकत देता है, हष्ट पुष्ट करता है, हमारे देश को मजबूत करता है. तो चाहे उन्होंने जिस भाव से इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा हो, लेकिन ये टैक्स वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत फ्रूटफुल है. जीएसटी के इतिहास को मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई और 1954 में पहली बार फ्रांस में इसको लागू किया गया. और इसके प्रभाव का आकलन जब शनय विश्व के अनेक देशों ने किया,
तो सभी देशों ने इसको अपने देश में लागू करने का निश्चय किया। आज पूरी दुनिया में लगभग 140 देश इस जीएसटी की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया और कालेलकर कमेटी का गठन किया, जो जीएसटी के संदर्भ में इसको हिंदुस्तान में कैसे लागू किया जा सकता है इसके प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेवारी उसे कमेटी को सौंपी गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट से किसी की असहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लागू करने का प्रयास किया। 2011 में तो एक यहाँ पर सदन के अंदर बिल भी लेकर आए, लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसके कारण उस बिल को पारित नहीं करा पाए। 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण 2016 में यह बिल एक संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ और 2017 में यह पूरे देश में लागू हुआ। और ये लागू करना आसान बात नहीं थी, बहुत सारी जटिलताएं थी। विश्व के जो दूसरे देश हैं जहाँ पर ये सफलतापूर्वक लागू हो रहा है, उनकी जो स्थानीय परिस्थिति है, उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है और भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत की जो आर्थिक संरचना है, उसमें काफ़ी विभिन्नता है। इसके कारण एक बड़ी चुनौती थी। आदरणीय सुशील मोदी जी ने ठीक ही स्वर्गीय अरुण जेटली जी का स्मरण किया है। उन्होंने अपनी कुशलता और मेधा के साथ, अपने चातुर्य के साथ, लोगों को कन्विंस करने की पावर के साथ पूरे देश के अंदर जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारें थी, उनके प्रतिनिधियों को सहमत किया, एक टेबल पर बैठाया और आज परिणाम है कि ये जीएसटी पूरे देश में समान रूप से लागू है, सभी सहमत हैं। आदरणीय अरुण जेटली जी के पश्चात आदरणीय निर्मला जी भी इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। ये जो जीएसटी का एक्ट है, इसमें प्रोविज़न है एक जीएसटी काउंसिल का, और जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। टैक्स के बारे में तो ठीक है, डिसाइड करती है, समय समय पर बैठती है, लेकिन अगर उसकी जो संरचना है, उस संरचना के बारे में अगर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचें तो हमारी देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है वो जीएसटी काउंसिल, हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। हम में वैचारिक स्तर पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश के कल्याण की बात आती है, देश को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो इस देश के भूभाग में रहने वाला व्यक्ति सच्चे और सही अर्थों में भारतीय है, और ये भारतीयता का प्रदर्शन करने वाली हमारी जीएसटी काउंसिल है। इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो प्रदर्शन है, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिए हैं, इस पर मैं उन सभी को, सभी साथियों को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसके, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार ऐसी सरकार होगी जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस पे विचार पर कार्य करेगी। ये जो जीएसटी टैक्स है, इसी को चरितार्थ करता है। अभी आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए हम सभी को बताया है कि 17 केंद्रीय कर और 13 राज्य स्तरीय करों का समावेश इस जीएसटी टैक्स के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो टैक्सों की जटिलता है, ये समाप्त की गई है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इसको परिलक्षित करता है। और ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी के माध्यम से बहुत सारी जटिलताएं समाप्त हुई हैं, व्यापार करना आसान हुआ है। इसकी बिल पर तो आया ही नहीं सर अभी मैं। अरे तो आपको मैं कहा था 4 मिनट समय था, आप 7 मिनट बोल चुके हैं, तो बिल पर बोलिए, बस 1 आध मिनट में बिल पर खत्म करिए। 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं बिल पे, इस बिल के संदर्भ में
क्योंकि समय कम है तो मैं चर्चा करते हुए करना चाहता हूं कि ये बिल केवल भूल सुधार का बिल है। भूल सुधार का इस मामले में है कि जैसे आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए बात की है कि इसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है, विशेष रूप से जो द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का गठन करने के लिए जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है उसके प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो उस प्रावधानों के साथ संगत बैठाने के लिए ये बिल प्रमुख रूप से लाया गया है। इसमें केवल न्यायिक अधिकारी ही नहीं, जुडिशियल मेंबर के रूप में जो हमारे एडवोकेट हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। जो आयु सीमा है वो आयु सीमा के भी जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान हमारे इस बिल के अंतर्गत जो ट्राइब्यूनल बनेगा वो आयु सीमा के प्रावधान इसमें भी हों, जिसमें न्यूनतम 50 वर्ष हो और अधिकतम मेंबर के लिए 67 ईयर हो और जो अध्यक्ष है उसके लिए 70 वर्ष हो। इतना ही प्रमुख रूप से संशोधन इस बिल में किया गया है। बाकी कंपोजिशन की बात है तो इसमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, अब विधि विशेषज्ञ हैं, राज्य के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि, इनका सभी का समावेश किया गया है। इतनी बातें करने के लिए इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिल जो है प्रमुख रूप से जो भूल हो गई है, जो छूट गया था, जो संगत नहीं बैठी थी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के साथ, उस संगत को बैठाने के लिए बिल लाया गया है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनकमेडल रविंद्र कुमार। Thank you to Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. I congratulate you, I'm seeing in the first time in the chair, Deputy Chairman, as Deputy Chairman. Sir, the Central Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2023, sir, this Act provides for levy and collection of CGST on the intrastate supply goods and services. Sir, mainly the bill proposes to amendment to Section 110, change in qualification of members of appellate tribunal and also age limit. Changing with regard to the qualification, the eligibility criteria, a judge of the High Court, district judge or additional judge, or the bill allows the advocates also who have 10 years experience as judicial member. Sir, I request the Honorable Finance Minister, instead of relaxing the age limit and extending the age limit, several advocates have been practicing in tax sites also. Practicing advocates may be considered as a judges of or the judicial members of the tax tribunals and appellate tribunal, because they are also equivalently able to